Hello. Islam. हमारा ये ऑर्डर कंटिन्यूटी रिलेटेड जो ऑर्डर कंटिन्यूटी ऑफ लेबेग इंटीग्रल फॉर स्टेप फंक्शंस है ना, वो कल हमने कंप्लीट किया था। वो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमारे पास अब ऑलरेडी अवेलेबल आ गई है। तो now we can pursue a new concept and this will be the concept of upper functions। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा इसका टाइटल है अपर फंक्शंस। बेसिकली विल बी हम देखेंगे व्हाट आर अपर फंक्शंस of step functions, upper functions of step functions and Lebesgue integral. functions ये होगा आज का हमारा टॉपिक। ठीक ना, बिफोर डिफाइनिंग अपर फंक्शंस हम पहले क्या करेंगे, विल रिकॉर्ड अ रिजल्ट। ये हमें बेसिकली चाहिए, ये एक important result होने जा रहा है as far as the Lebesgue integral for upper functions is concerned, as far as the well definedness of the Lebesgue integral for upper functions is concerned। ये result काफ़ी important होने जा रहा है, तो मैं पहले ही इसको लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद हम upper functions और Lebesgue integral for upper functions की definition पर जाएंगे। तो पहले आप एक इसे रिकॉर्ड करिए और हम रिकॉर्ड करेंगे इसको एज अ थियरम। स्क्रीन साफ साफ आ रही है आपको? यस। चलिए ठीक। स्टेटमेंट है, लेट x is mu be a measure space full stop if phi n running from 1 to infinity and psi n running from 1 to infinity be two sequences of step functions these are sequences of step functions or x s mu with और इनमें ये हो रहा है with phi n's increasing to f almost everywhere and psi n's increasing to f almost everywhere where this f, it's a function from x into r infinity, where r infinity is the extended real line. So therefore this f is going to be what? Extended real valued function defined on x। और यहाँ इस डिस्कशन में क्या ऐसे आ रहा है, this actually is the almost everywhere pointwise limit of these phi n's and psi n's, both phi n's as well as psi n's they are increasing to f। जब मैं ये लिखता हूँ ना, इसका मतलब असल में ये है, मतलब ये जो सिंबल आप यहाँ देख रहे हैं, it actually stands for two things।
पहली चीज ये, sorry, these are fians. पहली चीज ये, phi and x will be less than or equal to phi n plus 1 at x. This will be true for mu star almost all x is in x. ठीक, एक तो ये, और दूसरी दिस मीन्स इंक्रीजिंग, और ये कहाँ जा रही है, ये सीक्वेंस इवेंचुअली इट्स गोइंग टू f. The second thing it means this, it means this limit n goes to infinity phi n x, it will be f of x. और चूंकि a ही है यहाँ पर, तो यहाँ भी वही होगा for mu star almost all x, almost all x is in x. ठीक है ना. सिमिलरली जब आप ये देखते हैं ना यहाँ साइंस इंक्रीजिंग टू f, इसका भी मतलब ये होगा इसी तरह से, बस pns को साइंस से रिप्लेस करना है. और ये f क्या है यहाँ पर, इट्स एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन x, कोई एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है. बाकी हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते. हाँ, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उससे अगर आप वो इन्वोक करेंगे, अगर आप ना उसे देखेंगे, हमें कुछ ना इस f के भी बारे में कुछ चीजें फिर पता चलती है. चूंकि fians are stub functions are measurable, and we know that pointwise limit of measurable functions is measurable, so therefore this must be a measurable function. ठीक. Then the theorem says, अगर ऐसा है तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, ये fians और science अगर ना सिर्फ वर्ड्स में ऐसे कहा जाए, these science and fians, they are stub functions and they are increasing to the same function f. ये है इनमें सिमिलैरिटी, मतलब इनमें जो कॉमन है ना इस phi n और psi n में, जो चीज इनको कनेक्ट करती है वो ये है, they both increase to f. Now the theorem says this, then limit n goes to infinity integral phi n d mu, this will be same as limit n goes to infinity integral psi n d mu. बेसिकली आप यहाँ कह रहे हैं क्या, when you say that they are in both increasing to f, it means this, it means limit n goes to infinity phi n x is same as limit n goes to infinity sin x, right? So their limits are same. The theorem says the limits of their integrals will also be same. Limits are same and the limits of integrals are also same. This is guaranteed by the theorem. ठीक है, सबसे पहले हम इसी को प्रूव करेंगे. अब बिफोर गोइंग टू द प्रूफ, मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और इन्हें भी आप सेपरेटली अपनी नोटबुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. आपने ये पता होना चाहिए व्हाट इज द, जैसे आप कहते हैं जॉइन ऑफ टू फंक्शंस. इफ f and g are real valued functions defined on x, their join divided at x, it is defined basically as the maximum of fx and gx. और ये बराबर किसके होता है, it's equal f x plus gx plus mod fx minus gx divided by 2. So that means f join g is f plus g plus mod of f minus g divided by 2. ठीक, ज्वाइन कहिए या मैक्सिमम कहिए, एक ही बात है, मैक्सिमम ऑफ f कॉमन g. ठीक है ना. Now let's suppose x is mu is a measure space
and phi and psi are step functions, or this measure space X S, then what will be phi join psi? It will be phi plus psi plus mod of phi minus psi divided by 2. अब इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? What is this? तो ये राइट साइड में जो ये आ रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट, व्हाट इज दिस? मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिस इज अ स्टेप फंक्शन, आप मुझे बताएंगे कैसे? बताइए। हाँ, कैसे बताइए? अगर आप गलत भी होंगे कोई मसला नहीं, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करिए, कैसे है ये स्टेप फंक्शन? हमने कल देखा था ना, मॉडुलस ऑफ a step function is a step function, phi is a step function, psi is a step function, difference of step function is a step function, so this is a step function, modulus will be a step function, ठीक? So this thing is a step function. इसी तरह से this plus this is a step function. Then again, since sum is of step functions is a step function, so that means this whole thing is a step function. Divided by 2 means you are just scaling, so it will remain a step function. So कहने का मतलब ये है कि maximum of 2 step functions is a step function. Not just 2, अगर आप 3 भी लेंगे ना यहाँ, वो भी step function ही होगा. मतलब if we take phi 1, phi 2, phi 3, their maximum will also be a step function. So that means maximum of a finite number of step functions is a step function. इसी तरह से minimum, क्योंकि minimum जो है ना, minimum of this phi and psi, what will be this? By the way, इसके लिए जो symbol हम use करते थे वो तो क्या था? It was meet. Phi meet psi. It is what? It is phi plus psi minus phi minus psi in the modulus, ठीक, divided by 2. So by the same reasoning, minimum is also minimum of 2 step functions, and then you can easily generalize this and you can conclude that minimum of finite number of step functions is a step function. इसके लिख के रखिए दोनों चीजों को, चाहे minimum ले या maximum ले, a finite number of step functions you'll again get a step function. इसका भी हम काफी इस्तेमाल करने जा रहे हैं आगे. Maximum या minimum of finite number of step functions is a step function. अब वापस आप आइए ये हमारी अपनी थ्योरम पर. We are trying to prove this. Phi are going to increasing to f, psi are increasing to f, और हमें ये दिखाना है. आप सबसे पहले क्या करिए, fix m in the set of natural numbers. m को fix करिए, ठीक. Then for each n in the set of natural numbers, इसे देखिए,
rather we define gamma sub n. इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? For us gamma sub n will be phi sub n, ठीक, meet psi sub n. m is fixed, खाली n vary कर रहा है. phi and psi m's, we know that they are stub functions, and meet of two stub functions is a stub function. So that means gamma sub n's are stub functions. So that means you have a what? You have a sequence of stub functions. Then जो पहली चीज है जो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है, this gamma sub n running from 1 to infinity is a sequence of stub functions over measure space x sphere. और दूसरी चीज जो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है, अगर आप gamma sub n at x को देखेंगे, this is equal by definition in the first place, it's equal to what? It's the mean, so it is the minimum of phi sub n at x and psi sub n at x. Alright, तो ये मिलेगा आपको, and this is, देखिए आप क्या कर रहे हैं, this is less than or equal minimum of phi sub n plus 1 at x and psi sub m at x. क्या ये सही है? आप इस सेट, आप यहाँ मिनिमम ले रहे हैं किसी सेट का और नीचे भी वही कर रहे हैं, एक सेट है जिसका मिनिमम ले रहे हैं, आप सेट्स को कंपेयर करिए, जो दूसरा एलिमेंट है इन सेट्स का ये और ये सेम है, इसका दूसरा एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट सेम है. अब जो पहला एलिमेंट है वहाँ ये डिफर कर रहे हैं, इसमें है फी सब n, इसमें है फी सब n प्लस 1. अब फी सब n और फी सब n प्लस 1 में क्या रिलेशन है? We know that phi sub n's they increase, that means phi sub n is less than or equal to phi sub n plus 1 almost everywhere. So therefore this will be less than or equal to this almost everywhere. ठीक है? And what is this? Minimum of phi n plus 1 and psi m. This is precisely gamma sub n plus 1, which is equal to gamma sub n plus 1 at x. And this is true for mu star almost all x is in x. ठीक है, तो ये दूसरी चीज. अब तीसरी चीज जो हमें यहाँ से मिलेगी, what about this? What about limit n goes to infinity gamma sub n at x? This will be limit n goes to infinity. What is gamma sub n? Gamma sub n is the minimum, ठीक, और मिनिमम की जो वो फॉर्मुलेशन है ना इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस, हम वही यहाँ इस्तेमाल करेंगे. So it will be, it is minimum of phi n psi m, so it will be phi sub n at x plus psi sub m at x. ठीक है, then minus the modulus of
phi sub n at x, then minus psi sub m at x. ठीक है ना, divided by 2. ठीक, now this is further equal, और मैं आपसे ये पूछूंगा क्यों. This is equal f at x plus psi sub m at x, then minus mod f at x minus psi sub m at x divided by 2. अब मुझे आप बताएंगे ऐसा क्यों. थर्ड स्टेटमेंट में था लिमिट इसका. हाँ, बट मैं इसको अब ना बेसिकली यहाँ ना एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज जो हम इस्तेमाल करें वो है कंटिन्यूटी ऑफ मॉडुलस. मॉडुलस जो है ना इट्स कंटिन्यूअस, सो यू कैन टेक दिस लिमिट. यहाँ तो कोई मसला नहीं है, आप ये लिमिट डायरेक्टली इस पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लिमिट और फी एन के बीच में कुछ भी नहीं है. साई एम तो इसमें दिस इज फ्री ऑफ एन, तो इट इज इनवेरिएंट अंडर द लिमिट, ये वापस आएगा ऐसे. मसला यहाँ है ये जो मॉडुलस के अंदर है ना फी एन और एन पर लिमिट है. अब यहाँ ये लिमिट अंदर ले सकता है मॉडुलस के अंदर. व्हाई? बिकॉज मॉडुलस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, सो यू कैन टेक लिमिट इनसाइड और अंदर आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं. वहाँ इवैल्यूएशन जब आप करेंगे वहां से आपको मिलेगी लिमिट एज एफ एक्स, तो आपको ये मिलेगा. एंड व्हाट इज दिस, अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज दिस. मिनिमम ऑफ इट इज द मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड साई सब एम एट एक्स. अब मुझे बताइए इसका क्या होगा. व्हाट इज दिस, ये मिनिमम किसके बराबर होगा. साई एम एट एक्स. व्हाई? बिकॉज ये भी इंक्रीज हो रहा है ना टुवर्ड्स एक्स. psi m's are increasing to x, psi m's are increasing to f. Psi mx and the limit are increasing to f at x almost everywhere. So minimum will be psi m at x. The reason ये है because psi m's they are increasing to f almost everywhere. तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ से. Full stop. That is AC point number 3 का ही पार्ट है. That is what, that is, या नीचे अगर आप अलग से इसको आप देखेंगे क्या हो रहा है बेसिकली ऊपर. This is a sequence of step functions. They are increasing and they are increasing to what? They are increasing to psi sub m. That is gamma sub n everything from 1 to infinity is a sequence of step functions and these gamma sub n's they are increasing. और ये कहाँ increase हो रहा है? They are increasing to psi sub n. ठीक. What is psi sub m? It's a step function. Gamma sub n is also a step function. So we can use the order continuity, जो उसकी consequence है basically. जो मैंने आपको कल कहा था, इसको आप देख लीजिएगा. Hence, by the order continuity of Lebesgue integral for step functions we have, क्या मिलेगा हमें. We have this. Limit n goes to infinity integral gamma sub n d mu. This will be equal to, ठीक, integral psi sub m d mu.
basically you can take limit inside the integral or limit of gamma sub n is psi sub m, तो आपको ये मिलेगा. ठीक है, तो ये मिलेगा. Full stop. That is, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रल psi sub m d mu is equal limit n goes to infinity integral gamma sub n d mu, and integral gamma sub n d mu is लिमिट ऐसी रखेंगे हम n goes to infinity. ये जो इंटीग्रल gamma sub n है, यहाँ आप gamma sub n को जिसका एक्चुअल वैल्यू है वो आप दीजिए. व्हाट्स gamma sub n? It is phi sub n meet मतलब minimum psi sub m, right? And d mu. Now this is less than or equal. अब ये मैं आपसे फिर से पूछूंगा क्यों. Limit n goes to infinity integral phi sub n d mu. बताइए क्यों. इसका रीजन असल में ये है बिकॉज phi sub n meet psi sub m, चूंकि ये मिनिमम है, so therefore it is less than or equal phi sub n. और हमें पता है कि that integral for stub functions is monotone. These are stub functions by the way, so you can use monotonicity of integral for stub functions, or you can conclude integral this will be less than or equal to integral this. ठीक. और चूंकि हमें पता है कि limits preserve inequalities whenever limits exist, यहाँ limits exist होंगी. Why? Because of this ना increasing nature. ये जो है ना आपकी stub functions, they are increasing, so limits, sorry, the integrals will also increase, so they will possess limits will exist and they will preserve inequalities. तो जब आप यहाँ से भी limit लेंगे और वहाँ से भी inequality will be preserved और आपको ये मिलेगा. ठीक है, full stop. Now let's summarize this. देखिए अभी तक जो हमने किया ना उस हिसाब से हमारे पास क्या मिल रहा है. हमने क्या किया था ऊपर, हमने एक m लिया था. कहाँ लिया था? इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. कैसे लिया था? डजंट मैटर, आर्बिट्रेरली लिया था हमने ये. और आप देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग टू दिस m, this integral is less than or equal to this quantity. What is this quantity, by the way, if I ask you? What is the nature of this? It's a constant. So that means the sequence of integrals, integral psi sub m as m runs from 1 to infinity, is bounded above by this quantity. है या नहीं? और चूंकि ये जो आपकी psi m's जो है they are increasing, so integral psi m's will increase because integral is monotone, so therefore this is what? This is a non-decreasing sequence of real numbers, and a non-decreasing sequence of real numbers जो है it converges finitely or infinitely to its supremum. तो इसकी जो लिमिट होगी ना इस सीक्वेंस की, वो बेसिकली होगा इसका सुप्रीमम. So limit is same as supremum. This is upper bound. What's relationship between supremum and upper bound? Supremum is the least of the upper bounds. So supremum will be less than or equal to this, but supremum is limit, so limit of this will be less than or equal to this. मैं वही लिखने जा रहा हूँ. Letting m go to infinity, 1
can see at once that what that limit m goes to infinity integral psi sub m d mu is what is less than or equal to limit n goes to infinity integral phi sub n d mu ठीक और ये जो है ये लिमिट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आई कैन रिप्लेस दिस m by n also this limit is same as this limit n goes to infinity integral psi sub n d mu तो आप क्या देख रहे हैं दिस लिमिट इज लेस देन और इक्वल टू दिस लिमिट ठीक इसे आप रखिए स्टार और सिमिलरली if you switch the rules of phi n's and psi n's मतलब जहाँ phi n था वहाँ psi n अगर लिखेंगे और जहाँ psi n था वहाँ अगर आप phi n लिखेंगे बेसिकली यहाँ ना सिमेट्री को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे सिमिलरली बाय सिमेट्री of the situation we can also prove what? We can also prove this limit n goes to infinity integral phi n d mu is less than or equal to limit n goes to infinity integral psi n d mu right इसे आप रखिए डबल स्टार combining star and double star the result follows ठीक so well done हमें बस यही करना था हमें दिखाना था कि that the limits of the integrals will be same so whenever you have a ये आप याद रखिएगा this is very important जो अभी हम करने जा रहे हैं ना उसके लिए this is very very important मतलब इसके बिना वो हो ही नहीं सकता उसकी मैथमेटिकल वैलिडिटी के लिए ये जो है ना इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है वहां पर तो इसको आप अच्छे से दिल से याद रखेंगे whenever you have a sequence of whenever you have two sequences of step functions increasing to a common function f then the limits of their integrals will be same ठीक है now let's come to this जो हमारे आज के लेक्चर का के टाइटल में आप देख रहे हैं अपर फंक्शंस अब मैं बताऊंगा आपको व्हाट आर अपर फंक्शंस ऑफ स्टेप फंक्शंस इसे आप लिखिए अब एज अ डेफिनेशन अपर फंक्शंस let xs mu be a major space and f from x into r be a real valued function ऐसे वो वही है ये लिखना जरूरी नहीं है नए से इट्स अ रियल आप सिंपली लिखिए बी अ फंक्शन जब आप कहते हैं इनटू आर इट मींस इट्स रियल वैल्यूड बी अ फंक्शन फुल स्टॉप या कॉमा करिए यहाँ कॉमा देन दिस f is said to be an upper function
upper function of stub functions. It's said to be an upper function of stub functions. They are simply as an upper function. It's referred to as an upper function if and only if. If and only if. इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ. There exists, if and only if there exists a sequence phi n ranging from 1 to infinity of stub functions such that पहली चीज these phi n's they must increase. That means phi n it must be less than or equal to phi n plus 1 almost everywhere. And this should be true for all n's in the set of natural numbers. ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट ये है. तो ये होना चाहिए. दूसरा जो है वो ये है कि that in the limit phi n x जो है it must be f at x, and this should be true for mu star almost all x's and x. ठीक. The third thing is this limit n goes to infinity integral phi n d mu. This must be finite. अब देखिए जब आप ये कहते हैं ना phi n's are increasing, it means the sequence of integrals it must be increasing also. Phi n less than or equal to phi n plus 1 implies integral phi n plus 1 is greater or equal to integral phi n, right? Because phi n's are step functions and integral for step functions is monotone. So that means sequence of integrals is non-decreasing. They are increasing, we कह सकते हैं. So it must possess a limit. यहाँ उस लिमिट पर भी एक रिस्ट्रिक्शन है, वो लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए. So it must exist and exist finitely, the limit of integrals. वैसे existence तो है इसमें, it exists because of this non-decreasing nature of its terms. तो existence तो basically as such issue नहीं है. हाँ, it must be exist. Sorry, it must be finite. पता नहीं क्या कह रहा हूँ. It must be finite. Existence is not an issue. तो actually इस पर जो condition हम ले रहे हैं वो ये है. It must be finite. So this is the definition of an upper function. So देखिए पहले. A function f is said to be an upper function if you can find a sequence of stub functions. जिसमें ये तीन properties होंगी. एक तो stub functions increase होने चाहिए. Then they must increase to f almost everywhere, and the limit of their integrals must be finite. अगर आप ऐसा कर सकते हैं, if you can find one such sequence of stub functions, then f is said to be an upper function. अब इसके against आप कुछ remarks लिखेंगे. पहली remark ये है. Every upper function
is a measurable function. ये कैसे आएगा जरा मुझे बताइए. Pointwise limit. If it is an upper function, then it must be pointwise limit of stub functions almost everywhere. Stub functions are measurable, so it must be pointwise limit of measurable functions, and pointwise limit of measurable functions is measurable, so every upper function is a measurable function. Second, every stub function is an upper function. ये बताइए कैसे. तमाको रिमूव करें. Every stub function is an upper function. ये कैसे आएगा जरा इसकी जस्टिफिकेशन मुझे बताइए. ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. आप ये करिए. लेट phi be a stub function. ठीक है. So phi is a stub function. इसके बाद define phi sub n as phi for every n in the set of natural numbers. Then phi sub n running from 1 to infinity is a sequence of each phi sub n is phi. Phi is a stub function, so it's a sequence of stub functions. Stub functions with the following properties. पहली property, अगर आप phi n plus 1 को देखेंगे, this is same as, because for each n phi n is phi, so this is phi, and phi is also equal to phi n, so phi n plus 1 is equal to phi n. तो पहली जो requirement है ना वहाँ phi n plus 1 should be greater or equal to phi n, वो fulfill हो रही है because यहाँ equality है. ठीक. इसी तरह से second, what about the limit? What about limit n goes to infinity phi nx. Now phi nx is phi x, so this is limit n goes to infinity phi x, और इसमें n नहीं है, so this is same as phi x, because ये असल में एक constant sequence है. Every term is phi x. ठीक. तो ये भी हो रहा है. The limit is phi. The limit of phi n is phi. The third thing, what about the limit of integrals? Limit n goes to infinity integral phi n d mu. This will be same as limit n goes to infinity integral phi n is phi, so it will be integral phi d mu. Right? And what is this limit? इसमें n नहीं है, so this is integral phi d mu. This is integral of phi. Phi is a stub function. An integral of a stub function is a finite thing. So that's an infinity. है ना? So ये सारी चीजें fulfill हो रही है. You are able to find a sequence of stub functions which increases to phi, and the limit of integrals is finite. So that means phi is an upper function. But phi हमने क्या लिया था? It was a stub function. So that means every stub function. So the summary is this: every stub function is an upper function. So that means the collection of upper functions is a bigger collection than the collection of stub functions. When you say every stub function is an upper function, it means this. It means collection of upper functions is a bigger collection than the
collection of stub functions. ठीक. Now अब यहाँ ये ना we'll extend. तो अगर आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे ना इसकी, अब कह रहे हैं कि collection of upper functions is a bigger collection, तो पिक्चर कुछ ऐसी आएगी. Suppose this is the collection of upper functions. This is collection of upper functions. Or X S mu measure space. It's a bigger collection than the collection of stub functions. So stub functions की collection यहाँ है. Over X S mu, right? Now over this subset, we have a function which takes every point in this set to R, which is, अगर आप यहाँ कोई phi लेते हैं, phi will be a step function then, and we know how to convert this phi into what? Into a real number. You can take this phi into R. कैसे? आप इसको integrate करेंगे. So you have a mapping from this collection, from this sub collection rather, of stub functions into what? Into the real line, into R. Suppose this is R, so we have a mapping. तो mapping इस तरह से काम करती है. It maps a stub function phi in this collection of stub functions onto some real number. और real number क्या होगा? It will be actually integral phi d mu. So we have a mapping defined on this. हम क्या करेंगे? हम इसी mapping को extend करेंगे. फिलहाल के लिए this mapping is defined on this collection of stub functions. अब हम इसी mapping को extend करेंगे to the collection of upper functions. ठीक? तो अब यही मैं करने जा रहा हूँ. I'll define Lebesgue integral for upper functions और मैं आपको दिखाऊंगा it's actually an extension of the Lebesgue integral for stub functions. तो आप definition लिखिए. Lebesgue integral for upper functions. By the way, before this, let me tell you something more. जब आप कहते हैं ना f is an upper function, तो that means by definition there will be what? There will be a sequence of stub functions. ये जो sequences है हाँ आपको मिलेंगी if f is an upper function, कम से कम तो एक sequence होगी. अगर f upper function है तो कम से कम एक sequence होंगी, और अगर एक है then there will be infinitely many sequences. बता सकते हैं आप कैसे? Before the definition of Lebesgue integral for upper function, मेरे ख्याल से आपको ये भी कहना चाहिए. इसको भी आप as a remark लिखिए. If f is an upper function, if it's an upper function or measure space X is mu, then by definition we can find a sequence, और मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ and therefore infinitely many sequences. अगर एक है तो फिर infinitely many होंगे. किनकी sequences? Of stub functions
satisfying the properties one, two, and three. You must be able to find a sequence of step functions which satisfies these three properties. ये तीन properties 1, 2, 3. ये definition से ही follow होता है. अब यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ if there is one sequence there must be infinitely many sequences. इसको आप justify कर सकते हैं कैसे? देखिए if phi1, phi2, so on is a sequence satisfying these three properties, then this sequence phi2, phi3, phi4, so on. It's also a sequence of step functions and it also satisfies these three properties. इसके इसी तरह से हाँ तो means existence of one means actually there will be infinitely many. ठीक और ये जो sequences हैं इनको हम कहते हैं generating sequences for this upper function f. इसे आप लिख के रखिए. Any such sequence is called as a generating sequence. As a generating sequence for the upper function ऐसी कोई भी सीक्वेंस अगर आप लेंगे उसे हम कहते हैं व्हाट अ जनरेटिंग सीक्वेंस फॉर द अपर फंक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी लिख के रखिएगा व्हाट्स अ जनरेटिंग सीक्वेंस. तो आप ये भी आप कह सकते हैं एवरी अपर फंक्शन हैज at least one and therefore infinitely many generating sequences. ठीक. Now we'll define integral of an upper function in terms of using this generating sequence basically. तो अब वापस ये definition पर आइए. Lebesgue integral for upper functions. Let x s mu be a major space and f from x into R be an upper function. अब ये अपर फंक्शन है तो इसकी जनरेटिंग सीक्वेंस होगी if phi sub n running from 1 to infinity be a generating sequence. If this be a generating sequence for f, मैं कह रहा हूँ be a because there is no uniqueness to these generating sequences. If there is one, there will be actually infinitely many. If this be a generating sequence of f, then the Lebesgue integral of the upper function f, which we denoted by this symbol, integral f dv, is defined by it's defined by this. अब कह रहे देखिए आप कह रहे हैं यहाँ पर this is a generating sequence और अगर ये generating sequence है it must satisfy these three properties. Basically any sequence of step functions associated with an upper function satisfying these three properties is called a generating sequence. तो अगर phi n आप नीचे कह रहे it's a generating sequence so it must satisfy these three properties and one of these three properties is this.
the limit of integrals is finite. So this is a finite quantity और इसी को हम लेंगे as integral f. So it's defined by this integral f d mu. It will be defined as the limit of the integrals of the terms of its generating sequence. Pn. ठीक है? This is how we integrate an upper function. Integral of an upper function is defined as the limit of integrals of the stuff functions in its generating sequence. इसकी generating sequence में जो stuff functions है उन्हीं को आपको integrate करना है and then you need to take what? The limit of the integrals of those stuff functions. ठीक. अब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि this definition is free from ambiguities. ये करने के लिए मुझे ensure करना है कि that this should not be dependent upon the choice of this generating sequence. मतलब if I change the generating sequence, ऐसा नहीं होना चाहिए कि the integral changes. मतलब integral should not depend upon value of the integral, rather it should not depend upon the choice of the generating sequence. ये मैं आपको पहले दिखाऊंगा और दिखाना क्या ये हमने ऑलरेडी करके रखा है. इसको एज ए रिमार्क लिखेंगे आप. If suppose psi n running from 1 to infinity be some other if नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसे लिखे suppose this psi n running from 1 to infinity be some other generating sequence of f, then फिर क्या होगा? अगर ये generating sequence है then these psi-n's they must increase and in the limit they must be f a e, so that means they must increase to f almost everywhere, right? Phi-n's are also increasing to f almost everywhere and therefore जो हमने आज पहला रिजल्ट की देखा था वो थियरम हमने आज करी थी वही एप्लीकेबल है. आप देख रहे if you have two sequences of step functions, if you have two sequences of step functions increasing to a common function, then the limit of the integrals will be same. So that means what? By that theorem यहाँ क्या conclude कर सकते हैं फिर? And therefore by the above theorem जो आज हमने पहला रिजल्ट देखा था, it follows limit n goes to infinity integral psi n d mu is same as limit n goes to infinity integral phi n d mu. That means this limit is independent of the choice of the generating sequence. चाहे कोई भी generating sequence आप ले, these limits will be all same. So that means ये जो integral की जो definition है यहाँ पर it's free of ambiguities. So it's a mathematically acceptable definition. ठीक है? इसमें कोई ambiguity नहीं है. और यहाँ से हमें फिर ये भी समझ आता है कि अपर फंक्शन के इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए आप किसी भी जनरेटिंग सीक्वेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप phi-n's के लिए या psi-n's के लिए. इवेंचुअली
the end result will be same. तो कोई भी सीक्वेंस का आप इस्तेमाल, कोई भी जनरेटिंग सीक्वेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी को हम यूज करेंगे और मुझे आप बताइए व्हाट विल बी, अब यहाँ आप देख रहे हैं ना, every step function is an upper function. Now we defined Lebesgue integral for upper functions. Every step function is an upper function. So that means you can integrate a step function as an upper function. अब हमें पता है ना कि upper functions को कैसे integrate करते हैं. Step functions are also upper functions. Let's see what happens if we integrate a step function not as a step function but as an upper function. हमें इसको इंटीग्रेट करना है बट while treating it as an upper function. अब as an upper function इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? अब डेफिनेशन देखिए, मुझे बताइए क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए एक जनरेटिंग सीक्वेंस, और कौन सी जनरेटिंग सीक्वेंस? दैट इज इमैटेरियल. आप कोई भी जनरेटिंग सीक्वेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब जब हमने इस फी स्टेप फंक्शन को लिखा था एज एन अपर फंक्शन, जब हमने इसको देखा था एज एन अपर फंक्शन, तो हमारे लिए वहां जनरेटिंग सीक्वेंस क्या थी? दिस वाज जनरेटिंग सीक्वेंस. इसी को ट्रीट किया था ना हमने जब. और चूंकि इंटीग्रल इवैल्यूएट करने के लिए आप कोई भी जनरेटिंग सीक्वेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो लेट्स यूज दिस जनरेटिंग सीक्वेंस. तो हमें क्या मिलेगा फिर? इसको आप ध्यान में रखेंगे तो हमें फिर ये मिलेगा. इंटीग्रल मैं थोड़ा सा है ना इसको ये नॉन फॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ या इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ आए कि बेसिकली क्या हो रहा है. सो इंटीग्रल, हालांकि ये कोई फॉर्मल तरीका नहीं है इस चीज को लिखने का, बट आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ. इंटीग्रल ऑफ स्टेप फंक्शन फी as an upper function is equal, what will be this? It will be limit of integrals of these phi n's. So it will be limit n goes to infinity integral phi n. और ये कौन सा इंटीग्रल है यहाँ पर? दिस इज इंटीग्रल ऑफ स्टेप फंक्शन. ठीक, and this is same as what's phi n, it's phi. और n तो फिर जब phi n में n है ही नहीं, तो this is same as integral phi. So that means integral of step function as an upper function is same as its integral as a step function. So that means ये जो आप यहाँ कर रहे हैं, it's an extension of this function which takes the collection of step functions into R. So we have been able to extend the definition of integral from step functions to upper functions. ठीक है, इसको आप अच्छे से देखेंगे आप. और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये ऊपर वाला रिजल्ट जो आज हमने सबसे पहले किया था. विदाउट दिस आप इसकी एम्बिग्यूटी जो है ना, मतलब आप ये फिर आप इसको बेसिकली आप इसकी वेल डिफाइंडनेस, किसकी वेल डिफाइंडनेस? Lebesgue इंटीग्रल फॉर अपर फंक्शंस. इसकी जो वेल डिफाइंडनेस है ना, इसको आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते विदाउट दिस रिजल्ट. So this is very very important as far as the definition of Lebesgue integral for upper functions is concerned. It's because of this result that the definition comes out to be unambiguous, मतलब without ambiguities. It's because of this result that the definition अभी आपने देखी, it's a mathematically acceptable definition. कोई क्वेश्चन जो आप इसके रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, जो आज हमने यहाँ चीजें सीखी? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. और हाँ, अब ये मैंने ये कल भी आपको कहना, मैं ये कल भी आपसे कहना चाहता था, लेकिन शायद वो ऑलरेडी हमारा कल टाइम कम पड़ रहा था, तो मैं नहीं कह पाया आपसे.
जो भी मैंने आपको एक्सरसाइजेस दी है ना अभी तक, आज की डेट तक, उन्हीं को आप एज असाइनमेंट्स सबमिट करेंगे। ठीक है, ये आपकी इस इंटरनल एवेल्युएशन का ना कंपलसरी कंपोनेंट है, आपको ये पता होगा। जो आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है ना वहाँ, उसका कंपलसरी का मतलब उसमें बेसिकली हर एक कंपोनेंट अब कंपलसरी है। तो उसमें आपका एक कंपोनेंट असाइनमेंट्स भी है, तो इसे आप याद से सबमिट करिएगा। फिलहाल आपके पास 2-3 दिन और है, आप जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी ना तब आपको ये सबमिट करना है। चलिए ठीक है, फिर खुदा हाफिज। इसको देखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आज जो हमने चीज़ें यहाँ सीखी इसको दोबारा शाम को आप देखेंगे। मैं अभी यूट्यूब लिंक आपको दे रहा हूँ, सोने से पहले इसको आपको आज फिर से देखना है। ठीक है, फिर खुदा हाफिज।